next topic we're discussing is equations of circle. So I've already discussed this with you two before. Okay, if let's say we know the center of the circle is 3, 2 and the radius is let's say 5, then how do we find equation of this circle? याद है? याद है आपने करवाया है लेकिन वो इक्वेशन नहीं याद तो फिर नहीं याद Miss, ना? we can use the circle equation to find the equation for कैसे? Form, you have enough information to find. so that is x. Miss, so we use the origin coordinate, so that would be x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square ठीक है. is equal to 25. Good, is equals to 5 square, radius square. ठीक है, याद आया अबू बकर? चलो, what if the coordinates are minus 5, 2 and the radius is 3? अब बताओ अबू बकर, equation of this circle. मिस x plus 5 whole square y minus 2 whole square Plus y minus 2 whole square is equals equal to 3 square. 3 square. ठीक है, which is 9. So we write 9 here. Okay. Acha, what if you have the equation of the circle given to you, x minus 11 whole square plus y plus 3 whole square is equals to 150. And you're asked to state the radius and the center. So what's the center in this case? Center of the circle. What are the coordinates of the center of this give circle equation? It's 11 comma negative 3. ठीक है, 11 comma negative 3 and what's the radius? Miss 150 under root. Very good, under root 150. मिस आप एक मिनट ऊपर जा सकती हैं? Okay, sure. मिस सही है, हो गया. अच्छा, अब अबू बकर आप बता रहे हो x plus 3 whole square plus y minus 2 whole square is equals to 15. What's the center of the circle? What's the radius of the circle? मिस सेंटर होगा -3 और 2 ठीक है. And the radius और is? रेडियस होगा √15. बिल्कुल सही है. Okay. अच्छा जी, next, what if we have equation of the center of the circle in expanded form? X square plus y square minus 12x plus 8y minus 2 is equals to 0. Now, what is the center of this circle and what is the radius of the circle? कैसे find करते हैं? Okay. पहली चीज जो होनी चाहिए satisfy that is that both these coefficients should be 1. Coefficient of x square should be 1. Coefficient of y square can be 1. Only then it's a circle equation. Otherwise it's not. Acha. So that's done. So now what you do, you divide the coefficient of x with By 2. minus 2. Okay. And so what do we get? We get 6, miss. Positive 6. Yes, 6. And And then you 4. divide this with minus 2. We get minus 4. So that's the coordinate of the center of the circle. Okay. X के coordinate को divide by minus 2 और y के coordinate को divide by minus 2. So for radius, what do? You square these two coordinates, 6 square plus 4 square. We can ignore the signs because हम जब square करते हैं तो वो negative value भी positive हो जाती है. And then you write negative and the constant, this constant, minus constant. So minus 2. This is going to be the radius. So 6 square plus 4 square plus 2. 6 square plus 4 square plus 2 is 54. So the square radius is under root 54.
ठीक है ना, आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू जो आप दोनों ने सॉल्व करना। ओके, सो फॉर रायान द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 2x minus 4y plus 1 equals to 0. Ryan, give me the center and the radius for this one. And Abu Bakr, you're giving me x square plus y square minus 6x plus 8y minus 1 is equals to 0. मुझे एक चीज नहीं सिर्फ समझ आई, हम लोग 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो करते हैं, बट -2 क्यों बीच में माइनस include कर रहे हैं? कांस्टेंट आता है, इनका स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इधर से आता है जो सर्कल इक्वेशन में एक कांस्टेंट होता ठीक है। मिस सेंटर आ रहा है 3 कॉमा -2। है। सी सेंटर इज 3, -2 सही है, डिवाइडेड और बोथ द, मिस, ठीक है, हाँ जी, एंड व्हाट्स द रेडियस, मिस 14 लेट्स अंडर सी, रूट 14। 3 स्क्वायर plus 2 square minus constant which is minus 1. So 3 square plus 2 square plus 1 is 14. So square root of 14. ये इसका बोला, था एक सेकेंड, जी अब मैं सही फिर बोल, आपने ये बोला, ओके चलो अब आप जी जी। बताओ। मिस सेंटर आ रहा है -1, 2 ठीक है, एंड रेडियस आ रहा है मिस √7। लेट्स सी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, नहीं ये तो नहीं आ रहा, मिस -2, नहीं ओ आप, सॉरी कांस्टेंट, अच्छा -1 मिस मैंने गलती से कांस्टेंट 2 डाल दिया। कांस्टेंट आपका -1 है, सो व्हाट्स योर रेडियस, मिस 1 सेकंड, दैट वुड बी 5 6 मिस √6। नहीं 4 + 1 is 5 and then negative minus constant करना है, your constant is 1 so you subtract 1, so it's 1 square plus 2 square okay. minus I 1, thought miss negative sign be on it, so नहीं that negative, just becomes 2. हाँ, so the radius is just 2. Okay, अच्छा, now the last few things you need to know before we start the actual questions from the past paper are the सर्कल प्रॉपर्टीज you've done in O levels. ये 3 प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए from O levels. एक तो थी कि angle subtended from the diameter is 90. So if that's the diameter, then this angle would be 90 degrees. Or this angle here would be 90 degrees. Radius diameter से जो angle subtend होता है circumference पे, that is 90 degrees. This is the diameter because it's passing through the center. ठीक है, so you must know this property, angle subtended from diameter is 90. इस प्रॉपर्टी को ये भी कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इक्वल्स 90. Then another property from O levels is that in a circle, radius and tangent, they are perpendicular. This is the radius and that's the tangent and they are perpendicular. Radius is perpendicular to the tangent. मिस ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसको प्लीज आप एक्सप्लेन कर देंगे, ये समझ नहीं आई। हाँ, वो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको डायमीटर गिवन हो, डायमीटर क्या होता है जो सेंटर से पास कर रहा हो, डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर के इन दो कॉर्नर से सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा.
ये सारे एंगल्स 90 डिग्री और नीचे की साइड, बिल्कुल। ठीक है, डायमीटर के कॉर्नर से सर्कमफ्रेंस पे हर एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज that if you have a chord inside the circle, chord is any line between the circle passing through the circle, but it must not be the diameter. अगर वो center से नहीं गुजर रही तो ये chord कहलाती है. This is the chord. So if there's a chord and there's a line coming from the center of the circle to the chord, ये circle का center है और इससे chord तक एक line आ रही है और अगर ये line perpendicular है to the chord, then it cuts the chord into two equal parts. So if there's a chord and there's a line from the center of the circle and the chord and this line, they're perpendicular, then the chord gets cut into two equal parts. Okay. So line from center of circle bisects the chord. Bisects mean cuts it into two equal parts. Bisects the chord. In other words, ये जो येलो लाइन है ये ब्लैक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सर्कल। ओके, आई थिंक नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। Yes, miss. Okay, let me just open the worksheet. Okay, first question. Okay. Circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 20 is equals to 0 has center C and passes through points A and B. Find the coordinates of C. So, बताओगे C के क्या coordinates हैं? 1 second. -2 और 1। -2 और 1. डायन कैसे आए ये Yes. -1? मिस 4 को पहले डिवाइडेड बाय -2 किया एंड देन -2 को डिवाइडेड बाय -2 के गुड, ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, गुड। इट इज गिवन दैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी हैज कोऑर्डिनेट दिस, तो आई थिंक बेहतर होगा अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, इट विल गिव मोर क्लैरिटी। सो देयर इज अ सर्कल and its center has coordinates -2, 1 और फिर इसमें कोई A और B पॉइंट है, लेट्स से A इधर है और B इधर है, 2 points on the circle और उनका मिड पॉइंट बताया। इट इज गिवन दैट midpoint D of AB has coordinates 1.5 and 1.5. So D के coordinates are 1.5, 1.5, and that's the midpoint of AB. Okay. ये तो वो कॉर्ड वाला होगा मेरे Chord वाली बन रही है, ख्याल yes. में। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड पे 90 डिग्री की लाइन बन रही है तो वो इसको इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स इस सेंटर से डी पे कट करेगी लाइन। ठीक है, okay, let's see what are they asking us to find the equation of AB। अच्छा, AB की इक्वेशन हम निकाल लेंगे क्योंकि हम सेंटर टू पहले हम m स्लोप निकाल लेंगे। निकालेंगे ना। सॉरी, पहले हम m निकालेंगे, ये 2 -2 1 और 1.5 1.5 से। का एम नहीं निकालेंगे, एम क्यों निकालेंगे?
एम तो मिड पॉइंट डी है, ए और बी का मिड पॉइंट डी है, ये क्वेश्चन ने बताया हुआ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डी और सेंटर को कनेक्ट कर लेना इस तरह, और आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के की वजह से जो अभी हमने डिस्कस की थी, कि अगर सेंटर से एक लाइन एक कॉर्ड को 90 डिग्री पे कट करती है, तो वो फिर उसको इक्वल पार्ट्स में कट कर देती है। तो अब आपको बताया हुआ है कि ये जो डी है ये मिड पॉइंट है, तो डी अगर मिड पॉइंट है तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि अगर वो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है तो फिर 90 डिग्री रिलेशनशिप है बिटवीन द टू लाइंस। सो नाउ गिव मी द स्लोप ऑफ, सेंटर को हम सी कह दें, सेंटर के कोऑर्डिनेट सी है, सेंटर इज सी, सो फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी, गिव मी द स्लोप ऑफ सी डी। मिस मैंने भी कहा था CD का M लेके फिर उसको एम, नेगेटिव अच्छा, रेसिप्रोकल कर देंगे। सॉरी सॉरी, एम कह रहे थे, मैं मेरे जहन में ना मिड पॉइंट आ रहा था, आई थॉट यू मेंट मिड पॉइंट, यू मेंट ग्रेडियंट, सॉरी माय बैड। एम नहीं, ग्रेड, ठीक है, एम ग्रेडियंट ही होता है, आई डोंट नो व्हाई आई कंसिडर इट टू बी मिड पॉइंट। अच्छा, तो 1.5 माइनस 1 ओवर 1.5 प्लस 2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 क्या आता है? मैं 0.5 ओवर 3.5। हाँ, मुझे एग्जैक्टली बताओ ना फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, उसको एंटर करो कैलकुलेटर में, इट विल गिव यू अ नीट फ्रैक्शन। मिस 1/7। 1/7. Okay, so the slope is 1/7. So then the perpendicular slope of AB is going to be what? बस -7। ठीक है, -7. And how will you find equation of AB? वैसे वो उसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो पॉइंट्स पुट कर देंगे। हाँ, या फिर स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, या y मीन्स is equal y to माइनस mx y। plus c। वैसे लेकिन इक्वेशन ऑफ, उसने कहा नहीं हुआ कि इस फॉर्म में चाहिए। रीअरेंज कर लेंगे ना आखिरी आखिरी स्टेप में। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, so although y is equal to mx plus c is absolutely fine as well, y पर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रही हूँ, y minus y1 equals m which is -7 and x minus x1 which is 1.5, so y minus 1.5 equals -7x plus 7 into 1.5 is 10.5. So y equals -7x plus 11.5. बल्कि नहीं, I think 12. That is the equation of the line AB. Next part C is, hence by calculation find x coordinate of A and B. ए बी का x कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, ये A है ये B है। AB is also lying on the, A and B are lying on the equation of the circle. How do we find the Sorry. x coordinates of A and B? A and B are also lying on the yellow line, and A and B are also lying on the equation of the circle. So we can solve these two equations simultaneously. This one, Yes, miss. equation of the circle, and equation of line A. Equation of the line. ठीक है, and we only need the x coordinates. So y को replace कर देते हैं -7x plus 12 से. So we have x square plus, instead of y we write -7x plus -7x plus whole square. ठीक है, then plus 4x minus 2 -2 times, -7x plus 12. yes.
minus 20 is equals to 0. सम होल स्क्वायर को आइडेंटिटी से ओपन करें, हाँ, मुझे काफी लंबी नहीं हो जाएगी बच्ची? पर करना तो है. I'm going to directly use the formula a minus b whole square. अगर वो आता है a square minus 2ab plus b square, वो use कर लो. Otherwise, you can also write these brackets twice Twice. and then multiply the corresponding values. मैं directly कर रही हूँ. 49x squared minus 2ab. So 2 times 7 times 12 is 168x plus 12 square 144 plus 4x plus 14x minus 24 Before minus 20 is equals to 0. Quadratic equation आ रही है हमारे पास 50x square minus 168 plus 4 Miss plus 3 164. minus 49 नहीं आ रहा. Sorry, दोबारा चेक करो. 4x plus 14 minus 168. Plus 100 is equals to 0. This is what I'm getting. This मिस negative 49 x कैसे आया आपका? एक 168x का कोफिशिएंट minus 168, एक है 4 और एक है 14. जी, तो मिस 4 minus plus 14 is 18. 4 plus 14. So 168 minus 18 is 150. हाँ, गलत किया मैंने कुछ. It's minus 150. Yes, miss. Yes, it's minus 150. Okay. Now I'm going to divide both the sides with 50. So it's x square minus 3x plus 2 is equals to 0. So going to be x square minus 2x minus x plus 2 is equals to 0. You're factorizing using middle term breaking. X is Quadratic formula direct ना करें. कर लें. So Miss x1 is 2 and x2 is 1. but you have to show quadratic formula. जी, अगर आप miss. quadratic formula कर रहे हो या फिर एटलीस्ट नहीं, miss. ये करना है. हाँ, समझ आ गई. कैलकुलेट मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व करें. ये शो करना है और ये शो करना है. ये दो तो शो करना है. ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज होमवर्क में करो. ठीक है. ठीक है, करके आना है और उसी तरह ट्राई करना है जिस तरह पिछला किया था. आई नो Rayan did put in an effort and I'm sure Rayan ने अबू बकर जिसने मुझे टेक्स्ट किया था, so I know he did put in an effort and I'm sure कि वो improvement आएगी after a few days if you keep putting in an effort. And same goes for you Rayan. ठीक है, बहुत religiously आपने 2 और 3 खुद से करने की कोशिश की. ठीक है, I'll see you guys tomorrow. Take care. इंशाल्लाह. Allah Hafiz.